हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। इन ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को जब आपसे कहा जाता है कि आपको टी रेशोज आपको लर्न करने हैं। किसके? 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, same as 360 plus theta and 360 minus theta. It means every condition consists of 6 formulas. That is 72 formulas. और जैसे ये कहा जाता है कि आपको 72 फॉर्मूला लर्न करना है, आपकी हालत खराब हो जाती है। अब क्या करें? सो इसको लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं ASTC और अष्टक। कि कैसे काम करता है, इससे आप कैसे डायरेक्टली सारे टी रेशोज लर्न कर सकते हैं। इसको लर्न करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, this represent x-axis, this represent y-axis, this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. In this particular quadrant, here theta equals to 0 degree, theta equals to 90 degree, theta equals to 180 degree, theta equals to 270 degree. Again, this will also 360 degree. Right? In this first quadrant, it will govern by A, second quadrant will govern by S, third will govern by T, and last one will govern by C. A4 all positive. It means a T ratio lies in this first quadrant will remain positive always or will remain as it is. That is, either it is of 90 minus theta, or it is of plus theta, or it is of 360 plus theta. Same as in the second quadrant, sine and cosine are positive, rest are negative. It means either 90 plus theta or 180 minus theta will govern by this particular condition. Sine and cosine are positive and the rest are always negative. Same as in third quadrant, tan or cot are positive and rest are negative. That is 180 plus or 270 minus. And same as in the last, cos and sec are positive and rest are negative. Here we have to remember some phenomena. If the angle is of 90 plus theta, 90 minus theta, 270 plus theta or 270 minus theta, then T ratio will change. That is, sine will change into cos, cos will change into sine, tan will change into cot, cot will change into tan, sec will change into cosec, and cosec will change into sec. And the sign of particular term will be identified by this particular phenomenon. On the other hand, if there are 180 plus theta, 180 minus theta, 360 plus theta, or 360 plus theta minus theta, then no change in T ratio. तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज
नहीं रहेगा। साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। ठीक है, इसके लिए कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। साइन 90 माइनस थीटा, देन दिस इज 90 माइनस थीटा, सो t ratio will change, sin will change into cos theta, and it lies in the 90 minus theta means in the first quadrant. So in first quadrant all sign will be positive. So sin 90 minus theta is equals to plus का cos theta. Same as if I take sin 90 plus theta, then it will also change into the cos theta. But it lies in the second quadrant. 90 plus theta is the second quadrant. And in second quadrant, AS. S means sine or cosine will be positive and rest are negative. So it will also positive. On the other hand, if we take cos 90 plus theta, then it will convert into sin theta, but this will be negative as per the Astak. Same as if we take sin 180 plus theta, where it lies? It lies in the third quadrant. ये किसमें आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बात तो ये देखो, ये क्या है, ये 180 प्लस थीटा है, सो ये एज इट इज रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। एंड 180 प्लस थीटा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मींस दिस A S T C, T for tan or cot. It means in this particular quadrant, tan or cot remains positive and rest are negative, so it will be minus sin theta, right? अब आया बात समझ में आप लोगों को? सो दिस इज ए वेरी easy way to learn this type of formulas. If you like this lecture, then like and subscribe my channel. Thank you.